हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल देख ही चुके हैं। आज हम स्कैनर क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, व्हाट इज स्कैनर क्लास? स्कैनर क्लास इज पार्ट ऑफ जावा util package. It used to get input from user. Then how to use scanner class? First step, import java.util.scanner. First line in your code editor. Second step is create a scanner object. Every class need to be create an object. Creating a object of any class is scanner sc. New keyword is compulsory to create a scanner object. Scanner system.in. Step, read the input from the user. String name sc dot next int. Next int, next line, a method of scanner class. So we use next line to get a string value from the user. Let's come to our code editor, which is VS Code. So first step is to import java.util.scanner package to use the scanner. So let's write import java.util.scanner semicolon. Second step is create a class. Public class. For create a class keyword. Let's take a name main curly bracket. Inside the body of the main class there is a main method. Main method के लिए static void main string args curly bracket. Inside the main method we create a object of scanner class. So simply write scanner. Variable name any. You can take any of the similar name. Take a variable reference name. Sc, we take sc equals to new. If you were to create a object, then scanner. System dot for taking input from the keyboard. System dot system. System. Then print what we are taking from the user. So for printing anything, just use system dot out dot print ln or print double quotes के अंदर enter your name here semicolon, terminate the statement of, and then declare the string type string name equals to sc dot next line. For next line is the method of scanner class, which used to read the string value from the user from the keyboard, and then simply यूजर ने जो भी वैल्यू या फिर जो भी स्ट्रिंग एंटर किया है उसको प्रिंट करने के लिए सिंपल अगेन सिस्टम डॉट प्रिंट और प्रिंट एलन डबल कोट्स के अंदर लेट्स बी प्रिंट हेलो हेलो एंड कॉन्कैटिनेट करेंगे यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर किया. Simple. Then save the program as a class name, main class name, which is MAN. MAIN dot Java. Save. For compile the program, simply write command java c file name dot java, then again java code, java file name, simple. So enter your name here. Oh, name की spelling correct करना है. Okay. So
write something like Ram. हेलो राम जी। ओके, तो बीच में स्पेस नहीं है, बीच में स्पेस डबल कोट्स के अंदर हेलो के बाद थोड़ा सा स्पेस कर देंगे, देन अगेन कंपाइल करेंगे एग्जीक्यूट के लिए, एंड अगेन हेलो शिवम, एंटर, हेलो शिवम, which is a final output for our scanner class. Thanks for watching the video.